Good morning, student. Is my voice is audible? Yes, sir. Okay, fine. Good morning, sir. So, what we are discussing in the previous class, just anyone recap. So, basically, we are discussing about what applications of digital image processing. Yes or no? Yes. Yes or no? What we are discussing? क्या डिस्कस कर रहे थे इससे पहले क्लास में? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का डिफरेंट एप्लीकेशंस, मतलब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग किस किस फील्ड में यूज होता है, ठीक है? और आई कैन से व्हाई डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग is your so important nowadays for today's day, okay, or why it is having so much popularity. Fine. तो हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा था विथ रेस्पेक्ट टू बेसिकली 4 फील्ड पढ़ा था. पहला फील्ड जो था विथ रेस्पेक्ट टू योर ह्यूमन परसेप्शन था. फाइन. ह्यूमन परसेप्शन. तो ह्यूमन परसेप्शन में क्या था, बेसिकली वी विल एनहांस द इमेज, ओके, और वी विल परफॉर्म सम फिल्टरिंग to so that we can enhance the image with respect to the perception, like in context को increase करना, brightness को increase करना, या फिर blur image को improve करना. So these are the with respect to the human perception. Then we are studied with respect to the uh, medical research, how image processing can be used for the medical research, for example, like detecting the tumors, okay, or for the CT scan purpose, or we can say X-ray, gamma rays, or even for the sonography. Okay. Then we are studying with respect to the your automation, okay, machine automation. Then for example, machine automation में आपका industrial inspection के लिए होता है, verification के लिए. Then for finding the boundary value of the images, like you can see the lens card, they are suggesting the lens for the people by analyzing the face boundary. Okay. Similarly, we can use for detecting the movement of the object. Okay. Then it can be used for your law enforcement purpose also, okay, for capturing the images or targeting the any object, okay. So these are the automation part. Then we are discuss some uh, advanced technique like used for the satellite and aerial images, okay, for predicting the weather or any astrology study or atmospheric study के लिए. So different fields we are studying. Then finally we are used for image compression के use करते हैं. So basically image compression क्यों करते हैं? To reduce the size and transmit the image in your low bandwidth. Fine. So these are the some application we are discussed in the previous class. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था आपका how do we can represent the image. Okay. Okay. How do we can represent the image, which is very important part. Now your application part is completed. Now this is very important. So all of you can, my screen is visible to all of you. If the screen is visible, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब अभी से आपका important start होता है. ठीक है. This is all totally related to your syllabus. So what I say, an digital image can be represented and 2D image. ठीक है. एक कोई भी डिजिटल इमेज जो होता है आपका 2D इमेज या बेसिकली बोलते हैं 2D मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट होता है. फाइन. नाउ योर यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो टुवर्ड्स द वर्टिकल लाइन, डाउनवर्ड वर्टिकल रिप्रेजेंट होता है. नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0
Okay, it will start from 0 and it will goes to m minus 1. That means number of rows. X represent number of rows. Or further, if I say a digital image is represented mathematically a function f of what? X, y. बताया था पहले क्लास में. Where x, y is your spatial coordinate and f is your amplitude, which give the intensity at any of this coordinate. Fine. अगर इसको हम लोग graphically represent करेंगे, it will be represented graphically in this format, where x-axis is always in downwards, where x is number of rows, which will be, if m number of rows, the range of x will be starting from 0 to m minus 1. Is it clear? Now similarly, y-axis will be number of columns. Okay, y-axis represent number of columns. If it is n, then it starts from 0 to n minus 1. And how it is represented? It is represented horizontally, straight line. Fine. Now this is a representation of any image. Any digital image can be represented in this 2D matrix format. And each of this dot is called pixel. And each of this called pixel. Fine. And each of this, I can say further, each of this point represented by the function f of xy, which is again divided into part. One is called r of xy, where r is your reflective at that particular spatial surface. Okay, I can say r of x comma y, r of x comma y. f of xy को further हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. वन इज कॉल्ड r of x comma y. What is r of x comma y? It is reflective of the surface. Okay, reflective of the surface, or we can say reflective at the spatial coordinate x and y into I of xy. So what I of xy represent? It is nothing but intensity at that coordinate. Suppose I say this coordinate. Okay, suppose this is a value called 7 and this is a value called 10. So this coordinate will be 10 comma 7. So now what I have to find, what I of xy represent? Now I of xy at 10 comma 7, okay, I of xy at 10 comma 7 represent the intensity at that point. Fine. So now f of xy can be further elaborated in two functions. One is r of xy, which is reflectivity of the surface, and I is intensity at that particular coordinate. Okay, and this is called 0, 0 is starting point. Okay, always remember 0, 0 will be a starting point, and this is called origin. Fine. Now this is a representation that we are studied in the previous class. I hope it is clear to all of you. It is clear to all of you what you mean by origin. Is it clear? Yes, sir. Fine. So this is a basic representation. Okay, we will further study about this, how we represent actually. Now this is something about origin. What do you mean by origin? And this point where we start representing the image with the index 0, 0 is called your origin. So always remember, we will always start from the representing from the index 0, 0 से ही करते हैं. It should not be -1, -2, -3, or it should not be 1, 2, 3 something. It will always start from the coordinate what? 0, 0, which is called origin. Fine. Next we are studying how actually, for example, how we are representing. Now suppose this is a grayscale image. Okay, grayscale image को लिए और इस part of image को मैं अगर represent कर रहा हूँ, ठीक है, तो two techniques करते हैं. Basically, I have to perform sampling and quantization. Okay, these are two process which is which is used for converting an image to a digital format. Now this is your digital representation. Okay, this is your digital representation of an given image. Okay, now suppose I take this part of the image. पहले हम लोग क्या किए? Sampling. Suppose I perform the sampling here. Then I perform quantization. Okay, then finally I will get digital image. Now what will represent? Now each of these represent the intensity level of that particular index. Okay, so intensity level at that particular index. Okay, as I know, this is a grayscale image.
So how many bits are required? There is 8 bits required, and range of this intensity will be 0 to what? 0 to 255. तो जो भी 255. जो भी नंबर इस मैट्रिक्स में रहेगा आपका 0 से 255 रहेगा, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटेंसिटी ऑफ द ग्रे स्केल इमेज. एंड 0 स्टैंड फॉर योर ब्लैक and 1 stand for your what? Sorry, 255 stands for white, and rest of the image, rest of the number will be represent your intensity of grayscale. Exact gray will be in middle, which is 127. Is it clear? I hope so. How to represent a grayscale image? Clear? Now it is how represented. Now it is digital format. Each and every block. Now if you take this one, it is nothing but f of 0, 2. Index number क्या है? 0, 1, 2. So it is f of 0, 2. तो उसका spatial index क्या हो गया? 0, 2. Now at the 0, 2 index, I have to find the intensity of the image. Now intensity of the image is 16. Okay, 16 means it is somehow not black, little bit brighter than the black. Fine. So we will study how we will performing sampling and quantization. Just remember to convert any image to the digital format. Okay, digital image. So you have to perform two techniques. One is called sampling. Second one is called quantization. Okay. Similarly, if you want to represent an RBG image or color image, okay, color image पढ़ते हैं ना. Basically हम लोग दो image को represent करेंगे. One is grayscale or color image. Basically, most of time you work in grayscale image only. Okay, but sometimes we need to work on color image. If you want to represent the color image, then I have to take 3 matrix here. ओके, वहां पर जैसे एक मैट्रिक्स लिए थे, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स लेंगे. वन फॉर द रेड, वन फॉर द रेड, ओके, रेड कलर, सेकंड फॉर द ग्रीन कलर, एंड थर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट योर blue color. Fine. Is it clear why we are taking 3 matrix here? Now 3 matrix represent what? Each color के लिए, ठीक है. Again, each color is 8 bit. As I said, 24 bits are standard bit per pixel use, BPP, bit per pixel use to represent the images. Now 8 for the red, 8 for the green, and 8 for the blue. Then what will the ranges here? Again, range will be 0 to 255 for the red color. Then for the green also it will be 0 to 255, and for the blue also it will be 0 to 255. Okay, same technique again. So I have to perform sampling first, then I have to perform quantization to represent any color image to digital image. Fine. Is it clear? Is it clear why we are used 3 matrix, 3 components of 3 matrix here? For different component, we have to use different matrix. Fine. So let's move. Yeah. So again, this is another type of representation which is called binary image, या फिर black and white image भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहले आपको पता था टीवी में है कि नहीं, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था ना, उसमें आइदर ब्लैक और व्हाइट, तो उसको बोलते हैं बाइनरी इमेज या ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बोलते हैं, जहाँ पर 2 ही पिक्सल होते हैं, 0 and 1. ठीक है, 1 रिप्रेजेंट योर व्हाइट कलर एंड 0 रिप्रेजेंट योर ब्लैक कलर. ठीक है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को आप रिप्रेजेंट करोगे, अगेन सैम्पलिंग करोगे, देन अगेन क्वांटाइजेशन. द फर्स्ट स्टेप इज सैम्पलिंग, सेकंड step is quantization, then you will find a digital image. But what are data here? Data will be in the form of 0 and 1, because how many bits are used to represent black and white image? We will use 2 bit. Okay, 2 bits are used. Okay, 2 bits are used. That means maximum range will be 0 to 1. Okay, maximum range will be 0 to 1. That is only 2 bits. That is either I can store 0 or 1. That means 0 for the black color and 1 for the white color. Now you can see here this part, the origin. यहाँ पर देखोगे origin, अगर उसको मैं पिक्सल में डिवाइड करूँगा ना, suppose how many rows are there? 1, 2, 3, 4, 1 to 16. So it will be 4, 4, 4, 4. I can see the first row is completely black. That's the reason I fill 0. Again, if I say second row, it's completely black. So that's the reason I fill 0. As you see, the last row is completely white. So I can fill all the rows with 1. Fine. Clear? So now I hope all of you clear with digital image.
So digital image is nothing but representation in the form of 2D array where each of this element is called pixel or pixel value, which is nothing but intensity of that pixel at that particular spatial coordinate bolte hain, or spatial element. Fine. Any doubt regarding digital representation? We have actually not studied representation, just I given the example. Okay. Any doubt? Anyone any doubt? So just I give 1 minute here. So if you have any doubt, you can ask here how we are actually representing and what this matrix value actually meant for. Fine. So we will move on. Yes. Nobody's replying. Yes, sir. Okay. So I hope all of you understand. So let us continue. Okay. So we will start with our second part. So we will. So this is the end of your introduction part for the digital image processing. Okay. So we will start with our second part, which is your image representation and what are the different steps that should be followed in digital image processing. Okay. And third, how we can make a digital image, or how we can perform digitization. Fine. So let us first discuss what is image representation. Yeah, I hope the screen is visible to all of you. So as I said in earlier slide, okay. So if any, suppose this is my image, so this is my image. Okay, so basically the image is represented in 2D matrix of 2D matrix of axis y and x, axis y and x. Okay. Now each of this point is called pixel. Basically, mathematically represented by f of xy, which is nothing but r of x y into I of xy. Okay. So if any image is there, suppose I say this is my image. Okay, this is my image. Fine. So how it is represented? Now basically, if I say it is represented in the form of y-axis will be there, and there will be a x-axis. So the basically image is represented mathematically is represented by f of xy. Let's say now this is a graphical representation of digital image. Okay, basically we say it is a 2D window where downwards is your x-axis and this is your y-axis. And mathematically it is represented as f of xy, which can be divided into two different parts. One is called r of xy. Okay. So what is r of xy stands for? It is nothing but reflectivity at the particular coordinate. Okay, like if I say xy, it is nothing but the reflectivity at that coordinate x and y. So why reflectivity is important? As I already discussed, to visualize any object, okay, so we need a light source. Yes or no? Without a light source, an object cannot be uh, visible. So what actually processes the light source falls on an object, so it will reflect something that is visible to our eye. Now this reflectivity index or reflection is measured by R of xy. Fine. So and there is second property is also there, which is represented by I of xy. Now I of xy is nothing but, now again I of xy is nothing but intensity at that particular index. Okay. Now if suppose this is a considered object, okay. Now suppose assume that object is black and white. Now some of the reason the object we will see as a black color, and some of the reason
the object is seen as a white color. So what is the reason here? Now based on this intensity value, we are detecting the color of the image. If it is a color image, now we'll detect the color red, blue and green based on this intensity. Okay, this intensity level से ही हम लोग color को detect करते हैं. But what the reflection will do? Reflection will basically use for to visualize the image or to see the image. But actual intensity is measured by this function. Now this mathematical function fxy is basically derived in this manner. Fine. So basically two techniques are performed here to convert any image, suppose I given any image to you. Okay. So to convert this one, so first you have to perform the sampling of image. Then second you have to perform quantization of an image. Okay, so these two techniques are performed. So what do you mean by sampling then? Again, one more thing you have to remember. So whenever you represent a digital image, okay, there should be a finite number of pixels. Number of pixels should be finite. That means, so अभी अगर इसको पिक्सल में divide करेंगे, okay, there should be a finite number of pixels because we cannot represent that infinite pixel in our system. So there should be a finite number of pixels. Fine. Now if you assume that अगर हम assume करेंगे any image, suppose any image we are assuming, suppose this is not a digital image, okay, so I've given any image to you, कोई भी image आपको दे रहे हैं, okay. Now if I find the number of coordinates here in between the value x and y, ठीक है, अगर मैं x, suppose this is my coordinate x1 and x2, sorry, x1 and y1, and there is one more coordinate here, x2 and y2, then there will be another coordinate here, x3 and y3. Suppose the range of the y is 0 to L and range of the h is 0 to h. Okay. Now can anyone tell me how many possible coordinate I can derive from the range of x will be 0 to h and range of y will be 0 to L? कितना पॉसिबल कोऑर्डिनेट हम बना सकते हैं? How many possible coordinates are possible? Yes, getting my point? अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई इमेज रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई भी इमेज है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x रिप्रेजेंटेशन है, x का जो रेंज था, y का जो रेंज था 0 to L है, ठीक है, और x का जो रेंज है 0 to h. Fine. So if I consider this entire space as an image, okay, now what I have to do? Now I have to divide these images into x and y coordinates. So different x and y coordinates I divide करना, which is called pixel. Okay. Now what happens? So if I take all the points here from the range 0 to L for the y-axis and 0 to h for the x-axis, then how many points I can choose, like x1, y1, x2, y2, x3, y3 throughout this space? So how many points I can choose? Yes. How many coordinate I can choose throughout this axis? So L into H. L into h. मतलब कितने coordinates हम ऐसे बना सकते हैं? Now if it now 0 to L is continuous and 0 to h is also continuous, then how many possible coordinates? So there will be a infinite coordinate. Yes or no? है कि नहीं? अगर मैं बोलूँगा एक space में if L is continuous, now this is continuous and this is also continuous. So if I tell you to divide this images, ठीक है, और this part of square block into different pixel of x and y, तो अगर आप कोऑर्डिनेट चूज करना स्टार्ट करोगे, कितने कोऑर्डिनेट बन सकते हैं? नाउ देयर विल बी ए इनफिनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट. यस, बोलिए. ऐसे कोऑर्डिनेट का एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा ना? एरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं बोला आप अभी कितना पॉइंट निकालना है मुझे, सपोज इसमें और इसमें, ठीक है? यस सर. हाँ, मुझे मैं बोला कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं. सिंस
जीरो टेल क्या है, एक रियल नंबर है और जीरो टेल इसमें एक रियल नंबर है और रियल नंबर के बीच में कितने पॉइंट ले सकता हूँ मैं. Now this is a real number. In between the real Yes, number, sir. how many points are possible? Infinite possible. So then 0 to Infinite. कर ले, इसके बाद how many points are possible? Again infinite possible. Infinite. So Yes, what sir. happened? What happened? अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया? अगर मैं इसको अब मैं कंसीडर करूंगा अगर हर एक पॉइंट का एक पिक्सल, ठीक है, समझ में ना, Yeah. पॉइंट के पिक्सल को लेंगे तो क्या हो गया, इनफाइनाइट पिक्सल्स हो जाएगा. नाउ विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन योर डिजिटल कंप्यूटर, है कि नहीं. आई कैन नॉट Yes. रिप्रेजेंट इनफाइनाइट पिक्सल इन माय डिजिटल कंप्यूटर. तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को अभी इसको फाइनाइट करना है. जो पिक्सल को, जो पॉइंट या फिर जो कोऑर्डिनेट चूज करेंगे एक्स एंड वाई, वो फाइनाइट होना चाहिए. तो फाइनाइट कैसे करेंगे, मैं एक ग्रिड लूंगा. ओके, आई विल टेक एरे ऑफ ग्रिड. ग्रिड इज नथिंग बट स्क्वायर ब्लॉक्स. आई विल टेक अ स्क्वायर ब्लॉक. ठीक है, आई विल टेक अ स्क्वायर ब्लॉक लाइक दिस एंड आई विल इम्पोज ऑन माय इमेज. जो मेरा ऑलरेडी इमेज था उस पर इम्पोज करेंगे. ठीक है, क्या ले रहे हैं, एक ग्रिड ले रहे हैं. ग्रिड Square. मतलब एरे ग्रिड लेते हैं एक्चुअली. इज नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्क्वायर ब्लॉक. फाइन. और मैं क्या किया, उस एरे ग्रिड को वो इमेज के ऊपर हम लोग इम्पोज करेंगे. अब क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अगर इमेज को लूंगा और वहां पर अगर कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट करूंगा और देयर विल बी इनफाइनाइट coordinates x and y which cannot be represented in your digital computer. So that is the reason I have to make this finite. तो इसलिए हम लोगों ने अरे ग्रिड को इम्पोज किया. now I will consider each grid, जो each box दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ग्रिड इसको बोलते हैं ग्रिड के बॉक्सेस. ओके, now I will consider each this grid boxes as a single pixel. Okay, now this is a pixel, this is a pixel, this is a pixel. Now what happens? Now this infinite coordinates are converted into finite pixel. Yes or Right. no? Yes. Now this is Yes, counted. sir. Now I can divide it. This is finite. अब जो ये एक हो गया मेरा. Now I will consider this is one coordinate. Now I will this point को consider करूँगा एक point. This point को एक point. This point को एक point. This point को एक point. And this technique is called sampling. Okay, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, sampling. Sampling क्या था? In short, nothing but कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने को सैम्पलिंग बोलते हैं. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ सैम्पलिंग कैसे करते हैं. बट टाइम बिंग यू रिमेंबर, कोई भी इमेज जो होता है वो एफ एफ एक्स वाई में होता है. उसके दो पार्ट होते हैं. वन इज आर ऑफ एक्स वाई विच इज रिफ्लेक्टिविटी, सेकेंड इज आई ऑफ एक्स वाई विच इज इंटेंसिटी. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रेंज 0 to L है, इसका 0 to H है, तो वो क्या हो जाएगा, हर एक एक्स वाई को चूज करेंगे तो कंटिन्यूस होता है, जिसके कारण इन्फिनिट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मिलेगा. लेकिन इन्फिनिटी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड और स्टोर इन डिजिटल कंप्यूटर. So what you have to do, you have to make this infinity as a finite number of coordinates. To finite number of coordinates, what we have done, we impose, okay, we impose and grid, array of grid on image. ठीक है, तो क्या हुआ, now this grid blocks are act as a single pixel. So what we are able to do, now this is a finite number of pixels, which is nothing but sampling. ठीक है. Now one more problem is there. वन मोर प्रॉब्लम. सपोज मैं एक ग्रिड को लिया. ठीक है, एक ग्रिड को लिया. फाइन. नाउ सपोज आई कंसीडर वन ग्रिड. फाइन. नाउ व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ दिस ग्रिड, व्हाट विल द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ दिस ग्रिड. नाउ सपोज इज ए ग्रे स्केल इमेज. तो अगर ग्रे स्केल इमेज था, नाउ इसका जो इंटेंसिटी वैल्यू होगा, अगेन इट कैन बी वेरी फ्रॉम 0 to 255. आगे नहीं, आगे नहीं. यस, एग्री. अब मैं एक ही ग्रिड को ले रहा हूँ. अब इसका वैल्यू ग्रे स्केल इमेज था तो ये 0 to 255. नाउ अब मुझे बताओ हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू आई कैन टेक. नाउ अगेन देयर इज ए इनफाइनाइट नंबर्स आई कैन टेक. I can take 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 1.1, 1.2, any value I can take. If I say take any value, क्या बोल रहे हैं हम लोग? Now it will take any value in between the range 0 to 255. Now how many possible options are there? Now it will be again infinite. Now again the problem is I cannot store infinite value in memory. So again I have to perform something. Now I will perform
क्वांटाइजेशन, क्या बोलते हैं, आई विल परफॉर्म क्वांटाइजेशन ऑफ दिस इमेज intensity to get a finite value, so what I will do, I will divide this set of range. अब मैं इसको क्या करता हूँ, I will divide this set of range into 8 bits. अब मैं इसको क्या करूँगा, 8 bits. Now I will say if intensity is bit 1, now it will range from 0 to 8. If intensity is bit 2, or I can say it will range from something 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, कहने का मतलब है once you find the number of pixels or coordinate, now again second problem is now intensity of each coordinate again can take a range from 0 to 255 again, which will be infinite. So what you have to perform, now you have to perform quantization to make this range a finite. ठीक है, so we will study how sampling and quantization is performed. Fine, clear this point. Second point, how actually it is represented, in your memory. So in a memory, we will represent with the help of a two-dimensional matrix. Okay, तो memory में कैसे represent करोगे आप? Memory में जब represent करोगे, two-dimensional matrix में represent करेंगे. Okay, now matrix element will be, first element will be your f of 0, 0. Second will be f of 0, 1. Now this will be continuous. Suppose there is m number of rows and there is n number of columns. Okay. Now last element will be f of 0, n minus 1. Now second will be similarly 1 of 0, 1 of 1. Now it will continue f of 1 of n minus 1. Now this will be continue up to कहाँ से चलेगा, f of m minus 1, 0. Now f of m minus 1, 1. This will continue f of m minus 1 and n minus 1. Now each of this element in matrix, is your pixel. Now this pixel will represent this one, this pixel will represent this one, this pixel represent this one, and value of this element represent your intensity. Value of this element represent intensity. Now suppose I say the values are something 10, पहले देखें ना 10, 11, 12, 13. Now these values are nothing but intensity level. जो intensity level को represent किया था. Fine. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you how mathematically is represented? What is the problem when you're representing? Then you have to perform sampling and quantization. So when you perform the sampling and quantization, then it will be actual representation, and this is a matrix representation for an image. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so same thing that will be shown in a slide. Okay, तो slide में भी same thing बताया गया है जो आपने भी discuss किया. So what we are taken, So, in a matrix representation, we only store the value of intensity. yeah, only value of intensity. Now it will represent 0, 0 मतलब x equal to 0, y equal to 0. ठीक है, अब यहाँ पर जो value store करेंगे उसका intensity value store करेंगे. Okay, now But this sir, what about the reflective value? reflective value, only reflective value will be beside your coordinate. ठीक है, reflective value जो यहाँ पर xy लिख रहे हैं ना, it is nothing but it is used for identifying your coordinate. Fine, which is your coordinate xy, जिसको बोलते हैं हम, इसको बेसिकली सैम्पलिंग बोलते हैं. ठीक है, और ये जो होता है आपका इंटेंसिटी दिखाता है उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पेशल स्पेस में और पर्टिकुलर वैल्यू एक्स एंड वाई में उसका इंटेंसिटी क्या है. राइट, आई फॉर राइट एफ ऑफ 0, 0. नाउ 0, 0 इज योर कोऑर्डिनेट वैल्यू और उसका इंटेंसिटी क्या है. ठीक है, अभी कोई भी इमेज लेते हैं, सपोज 0, 0 में रेड कलर दिख रहा है. ठीक है,
सपोज बोला ये पार्ट हम्म। रेड दिख रहा है मुझे, अब रेड कैसे दिख रहा है वो, पहले तो इस रीजन को हम लोग डिवाइड किए, फाइन, फिर उस रीजन को डिवाइड करने के बाद उस रीजन का हम लोग इंटेंसिटी निकाले, इसलिए हम लोग को वो रेड दिखता है। क्लियर? यस सर, मींस फाइनल मैट्रिक्स में सिर्फ इंटेंसिटी वैल्यू ही स्टोर होगा इंटेंसिटी ना? वैल्यू स्टोर होगा, इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर होगा। So I will show you. Suppose now it is image, okay, same जो बोला होता, now they will superimpose a grid here to divide into different पिक्सेल्स बोलते हैं या फिर ग्रिड ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, एरे ऑफ ग्रिड। नाउ यू कैन सी दिस से माय जो एनालॉग इमेज या बोलते हैं सिंपल इमेज जो देते हैं हम लोग। नाउ ग्रिड इम्पोज करने के बाद क्या होता है, नाउ आई कैन आइडेंटिफाई द फाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट व्हिच इज कॉल्ड सैंपलिंग, then for the intensity I will perform the quantization. So once I perform, it can be represented in this matrix format, which is basically always अगर image size क्या क्या होता है 256 into 256 या फिर 512 into 512 on 1024 and 1024, which is standard image, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, बेसिकली जब भी हम लोग इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में यूज करते हैं, इमेज साइज बोलते हैं। और जो कि ग्रे स्केल इमेज था इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ बिट्स हुआ 8, इसलिए क्वांटाइजेशन का जो साइज लिए बिट 8 लिए, ठीक है। तो अभी सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के बारे में वरीड नहीं होगा कि हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, फाइन। तो वंस वी परफॉर्म, नाउ दिस इज योर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। नाउ इफ यू सी द एग्जांपल हियर, ठीक है, वो स्लाइड में भूल गया था, तो उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर आएंगे हम लोग, इसको मैं सपोज दिस पार्ट ऑफ इमेज, सपोज कैन टेक 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करूंगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस मैट्रिक्स। नाउ दिस विल बी 0 0, सपोज इंटेंसिटी इज 10, तो यहाँ पे 10 देंगे। नाउ सपोज दिस इज अगेन 0 1, सपोज इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा है तो 12, सपोज दिस पार्ट अगेन सेम है तो 12। नाउ सपोज दिस इज 9 और 11 तो 14 तो 15 9 8 6. Now what this each block represent? Now this is represent the coordinate 0 0 means this block और उसका इंटेंसिटी कितना था 10, this second block उसका इंटेंसिटी कितना था 12, then 12। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इमेज को जो ओरिजिनल इमेज था उसको हम डिफरेंट ब्लॉक या ग्रिड्स में डिवाइड कर रहे हैं और इस ग्रिड का इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट नाउ अब क्या होगा, नाउ आई कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग हियर, है कि नहीं। अब इस नंबर्स पे हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इमेज पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ओके। So this is called digital image representation. So 1 minute is there. Any doubt? Any doubt? How to represent the image? डिजिटल इमेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो टाइमिंग आपको याद रखना है, 2 डायमेंशन मैट्रिक्स में यूज करते हैं। हर एक पॉइंट जो होता है उसका एफ ऑफ एक्स वाई होता है, एंड वहां पर एफ ऑफ एक्स वाई नथिंग बट इट विल गिव द इंटेंसिटी पॉइंट। एनी डाउट? सो एनी डाउट? Sir, can we convert vector image to digital image? या यू कैन कन्वर्ट द वेक्टर इमेज टू डिजिटल इमेज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्केलर या But वेक्टर इमेज क्या होता है? वेक्टर इमेज